कहाँ इंग्लैंड ने सोचा होगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो शायद हमें कुछ सुकून मिले, लेकिन वो कहानी पलटने के लिए हाजिर हुए आकाशदीप ऑन टेस्ट डेब्यू। अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए सुबह में ही रांची में ही रॉक्ड इंग्लैंड एंड हाउ 3 wickets in the opening session, 3 wickets in a fiery morning spell of 7 overs, जहां पे उन्होंने सिर्फ 24 रन गंवाए। एंड थैंक्स टू दैट सेशन 1 में इंडिया ने इंग्लैंड के ऊपर अपना रोप जमाया। स्वागत है आपका फॉलो द ब्लूज लाइव पर। रांची टेस्ट तो है ही हमारे ध्यान में, साथ में खुशखबरी भी है आज की ऋषभ पंत की वापसी लगभग तय है। वेलकम टू एवरीवन एंड वेलकम टू नागराज गोलापड़ी, सीनियर जर्नलिस्ट ESPN Cricket Info and our FTB insider Rohan Deshmukh. Thank you gentlemen for your time. It has been quite a day of Test cricket in Ranchi. पहले सेशन में तो क्या कुछ नहीं हुआ, 5 विकेट गिरे, 5 रिव्यूज आए। इंग्लैंड ने लगभग 5 पर ओवर का रन रेट मेंटेन रखा, 112 पे 5 था पहले सेशन के एंड पर स्कोर। उसके बाद इंग्लैंड को संभाला जो रूट और बेन फोक्स ने, एक भी विकेट नहीं गंवाया दूसरे सेशन में। पहली बार कि इंग्लैंड के साथ ऐसा हुआ हो। एंड इवेंचुअली जो रूट स्टेड अनबीटन टिल स्टंप। उन्होंने कंप्लीट किया अपना 31वां टेस्ट शतक एंड हिज 10th अगेंस्ट इंडिया, रिकॉर्ड फॉर एनी बैटर। स्टंप पे इंग्लैंड 302 पर 7। सो देन नागराज, रोहन कमिंग टू यू फर्स्ट, किसका दिन रहा ये पहला दिन रांची में? It was at the start India's day, right? नागराज एंड यश, लेकिन जिस तरह से जो रूट ने वो 100 स्कोर किया इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे, अगेन लेट्स गेट बैक टू द वे ही स्कोर्ड दैट 100. इट वाज समथिंग व्हिच वी वर ऑल द एक्सपर्ट्स वर इनफैक्ट सेइंग, फॉर्मर क्रिकेटर्स वर सेइंग कि जो रूट को जिस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए उस तरह से वो नहीं कर रहे हैं, और उसकी कहीं ना कहीं झलक जो है आज के जो है इनिंग्स में दिखी। बट obviously start of the day, if you look at it, it all belonged to the newcomer of the Indian pace attack, and what a start he had to his test career. Absolutely. That first session was all about Akashdeep, wasn't it, Nagraj? To be on debut, to be replacing Jasprit Bumrah on a surface where everyone's expecting it will be all about spin, but Akashdeep just showed he belonged right from his first spell. Yeah, I mean that first wicket itself, which was off a no ball, which set everyone kind of tongues rolling. Sanjay Manjrekar, I think, almost jumped out of his chair describing that wicket, only to realize that it was slightly too early for getting excited because of the no ball. I mean, I'm talking about the Zach Crawley, if that many will remember, and Akashdeep will never forget that. Even if it was a no ball, sending a stump cartwheeling, flying stumps is always a memorable thing. But it started on a memorable note also. 3 wickets immediately he grabbed. He kind of improvised. He stuck. What stood out straight away for everybody, not just us, I'm sure, is including the opponents, is the accuracy, the line that he the consistency of his attack. He was very disciplined, and he just kind of has he kind of translated that promise that the selectors thought he had into, and also like the faith that that Indian team think tank thought that this guy is better at the moment, as a better option than Mukesh Kumar, who many would have thought would have been the sort of first choice to replace Jasprit Bumrah, as soon as we came to know that Bumrah is being rested for this test. You mentioned the word discipline there, Nagraj, and it took a lot of discipline for Akashdeep to make his way here. काफी एक संघर्ष की कहानी है आकाशदीप की कहानी। तो कैसे पहुंचे वो इधर तक, आइए जानते हैं आकाशदीप की कहानी उन्हीं की ज़बान। 2007 का जब वर्ल्ड कप फाइनल था तो वो मेरा पहला मैच था। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं वो मैच देखा था। तो मैच देखने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे मैच देख रहे थे। तो सारे लोग मैच देख रहे थे हमारे यहाँ। तो हम बाहर निकल के अचानक से प्लास्टिक का बैट था, वो बैट मैंने पकड़ा उस समय। तो उसके बाद से पता नहीं अंदर से शौक एक आया कि मुझे ऐसे खेलना है। मुझे पता नहीं था क्रिकेट होता क्या है, इसमें क्या होता है, बट एक वो गेम का मेरे अंदर क्रेज़ आया। तो मैं सुबह से खेलना शुरू किया, मुझे पता नहीं था। फिर धीरे धीरे आगे होते होते मैंने वो टेनिस बॉल से फिर खेलना शुरू किया था। एज ए बैट्समैन मैं क्रिकेट करियर शुरू किया था, तो उसमें बैटिंग ही करता था। तो 2-4-5 साल तक बैटिंग किया, अच्छा बैट्समैन हुआ है। लेकिन बाद में मेरा हाइट बढ़ा, तो मैं जब गांव के टीम में आया तो लोग मुझसे बॉलिंग कराने लगे टेनिस बॉल से। और उस समय इधर क्रिकेट नहीं था,
तो फिर मैं 2014-15 तक खेलते रहा वही टेनिस क्रिकेट। फिर पापा का प्रॉब्लम हुआ तो मैं 1 साल 2 साल क्रिकेट से दूर हुआ। फिर जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो मैं फिर दिल्ली गया। दिल्ली के बाद मेरे एक अंकल रहते हैं दुर्गापुर में, उनका बेटा वहाँ प्रैक्टिस करता है कोलकाता में। तो उसने मुझे फोर्स किया कि भैया आप यहाँ आओ, कोलकाता का क्रिकेट बहुत फेयर है, यहाँ बहुत क्रिकेट अच्छा है। तो मैंने कोलकाता गया, वहाँ पे मेरा पहली साल ही फर्स्ट डिवीज़न क्लब में हुआ और उस साल मैं अच्छा विकेट टेकर था, अपने क्लब की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर था और उधर लिस्ट में मेरा नाम आया 23। तो वहाँ मैंने गया, फिर वहाँ सबको मैंने पेस से इम्प्रेस किया। वहाँ पे टी शेखर सर थे हमारे बॉलिंग कोच, सब लोगों ने इम्प्रेस हुआ। उस साल तो मैं खेल नहीं पाया, लेकिन फिर अगले साल से मेरा क्रिकेट का वो जर्नी है जो स्टार्ट हुआ। हमारे गांव में हमसे पहले बहुत सारे क्रिकेटर क्रिकेट की वजह से अपना करियर उनका वो मतलब असफल हो गया था, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। बहुत दिन तक क्रिकेट खेल के लास्ट में वो गांव में रह रहे थे, खेती कर रहे थे। तो पापा को ये सब पसंद नहीं था और मेरे पापा टीचर थे तो वो भी चाह रहे थे कि हम भी कुछ गवर्नमेंट जॉब में जाएं, इसलिए वो हमेशा मना करते थे। बट जब भी वो पढ़ाने जाते थे तो उस टाइम में हम घर से छुप के, क्योंकि मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी, तो हम जाके धूप में एक बच्चा पकड़ के अपना क्रिकेट खेलते रहते थे। तेज़ फेंकना मेरा पेस खासियत है, मैं उसी पे फोकस करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि मैं इंडिया के सबसे तेज़ गेंदबाज के लिस्ट में आऊँ। A remarkable story of resilience, thrown into the deep end on Test debut, and what a start it has been to Akashdeep's career. But I'm going to come back to you, Nagraj. What more can you tell us about his rise before doing all that he's done today to capture the attention of the global audience? How has Akashdeep got till here? Yeah, test cap number 313, am I right? Has a unique story to tell. And Rahul Dravid, when he presented the cap, India head coach, when he presenting the cap, he kind of narrated Akashdeep's story to him, and it was such a proud moment to listen to that story. And when you hear, for all of us who don't know much about Akashdeep, when you hear that story, you realize that how much not just luck but determination also plays, and a role in how your journey ends, where you end up. In his own words, I like the quote he said, "अपने गांव की सड़क की जैसी journey रही है, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़." So it's. I was speaking to Abhimanyu Iswaran, who has been a former Bengal captain till last year, and then also leads India A. And he has played a lot with Akashdeep, including just last month against England Lions, where Abhimanyu was the captain and Akashdeep was one of the star performers. Abhimanyu said that the key difference between Akashdeep and Mukesh is not just the pace. Akashdeep bowls at a higher pace than compared to Mukesh, but the difference is that while Mukesh relies on mainly seam, Akash is more on seam and a swing bowler. And what is interesting is apparently, as Akashdeep said himself, he started as a batter, and one of his unique innings, or rather one of the innings that people will talk about in domestic cricket, is he scored a 50 in about 18 deliveries, and this was when Bengal created a record 2 Ranchi trophies in 2 seasons back in Ranchi Trophy, where all the 9 batters scored 50 runs, and this was during the pandemic years. So he's known more as a batter to begin with at one point, but then when he started bowling, like he was saying, from tennis ball to his journey progressed, he came in as an in-swing bowler. But apparently last year, Abhimanyu was saying that he had an injury during the Syed Mushtaq Ali or something, and that injury for some reason has helped with his wrist position, and he can now kind of also impart outswing, which we could see today. Remember that Ben Duckett wicket, which is very, very interesting, that he came wide of the crease and he was still able to take the ball away, and Duckett kind of edged that. So it clearly shows that there is and remember this, that in last year's Ranji Trophy for Bengal, where they made the final, Akashdeep was one of the highest wicket takers, not just in the season, but he was the player of the match in both the quarterfinals and the semi-finals. And the last bit I want to say about that semi-final is that pitch against MP in Indore was a flat track, slow and low, which is what is it in Ranchi. So you could expect a little bit more in the second innings when Akashdeep comes on to bowl. Nagraj, कहीं ना कहीं shades of Mohammad Shami in the way Akashdeep bowled, ऐसा लगा कि उसी तरह की line and length डाल रहे वो? Yeah.
स्पेशली जो क्रॉली का विकेट था ना, जो उसने स्टंप उड़ा दिया था, मुझे तो लगा शामी इज लाइक ही अटैक्स, शामी स्टिक्स टू दैट विकेट टू विकेट लाइन एंड loves to hit the stumps, break the stumps. So I think he's more a skiddy sort of a, I'm still trying to figure out whether he's more a skiddy bowler or whether he's more a hit the deck bowler. It seems like he's more a skiddy bowler because if you look at his front leg, and this is not me, a bowling coach, this is I was hearing, I have to be honest, I was hearing Steve Finn talking here on TNT Sport, and Steve Finn said, look at his front leg when it lands, there is a he kind of bends it, and that shows that his release is lower and on, so, and which means, and the wickets that he's got, he's attacking the stumps, it's like more skiddy length. So and which is what Shami is also. Shami's way ahead, as we know, in every department. But having played for Bengal where Shami was playing, they would have learned the tricks and shared the tricks. So yeah, I mean, Shami's absence is felt, but when you have bowlers like Akashdeep or Mukesh Kumar or someone in the domestic cricket, India should be happy that their bowling stables are pretty rich, fast bowling stables, I would say. सो प्रॉपर नागा, अगर आपने मेंशन नहीं किया होता तो हम मान जाते कि स्टीवन फिन नहीं, ये आप ही का एनालिसिस है। पर आकाशदीप पर इस दिन के प्रदर्शन के बाद सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, इंग्लैंड की तो खास तौर से टिकी रहेगी। कल उन्हें नेगेट करना है, उसके आगे जैसा नागराज ने बताया शायद सेकेंड इनिंग्स में भी आकाशदीप विल हैव अ रोल टू प्ले। बट रोहन 302 पर 7, यू फील गेम समवेयर बैलेंस में है, इंडिया को कैसे अप्रोच करना चाहिए दूसरा दिन? Yeah, I mean seriously, once they had got those 5 wickets, sort of expected था कि जल्दी wrap up हो जाए, लेकिन Joe Root obviously playing a special knock there. Unless you don't get him out in the first hour or so, we really don't expect, don't want India to really doesn't want England to score, put more runs on the board, considering जिस तरह का विकेट रांची का विकेट ये टर्न आउट हुआ है। चलिए, सो वी विल कीप एन आई आउट दूसरे दिन में इंडिया कितने रन पर कंट्रोल कर सकती है इंग्लैंड की इस पहली पारी को रांची के इस पिच पर रांची से अब हम नजर हटाते हुए बढ़ते हैं दिन के दूसरे बड़े कहानी में, जो है ऋषभ पंत। उनकी वापसी तय है, वो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे और पार्थ जिंदल ने कल के एक स्टेटमेंट में काफी खुशी बटोर दी है दिल्ली फैंस में, इंडियन क्रिकेट फैंस में। ऋषभ बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी शुरू कर दी है। पहले 7 मैचों में हम उन्हें सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खिलाएंगे, उसके बाद उनकी फिटनेस देखकर आगे का फैसला लेंगे, ये कहा पार्थ जिंदल ने, जो कि है को-ओनर दिल्ली कैपिटल्स के। सो नागराज, दैट इज रियली बिग न्यूज कमिंग आउट फॉर दिल्ली कैपिटल्स ऑफ कोर्स, बट इन इफ यू लुक एट द बिगर पर्सपेक्टिव फॉर इंडियन क्रिकेट। Yeah, I was surprised myself when I just pinged Path for something and he just said that let's talk later, and he kind of opened up so much that I was like, wow, great. This is good. That Path is like he's someone who's like a very enthusiastic owner, but he is very, very keen, also student in a way. He follows a lot of cricket. Yes, and so he was like, he was absolutely certain, subject to fitness. He did make that point, the subject to fitness clearance from the BCCI medical staff at NCA, where Rishabh Pant right now is. He will start both as a captain and most importantly as a batter for the first half. So we already have chalked out a plan, the think tank led by the Delhi Capitals think tank led by Saurav Ganguly, who's the director of cricket there, and Ricky Ponting, who's the head coach, as we know. So and Pant starting as a batter immediately, as we know, no doubt he's more than an X factor. He would become like that crucial cog in the both. He can play in the top order as well as the middle order. He can play as a power hitter. He's a power hitter anyway. He can play as an anchor if need be. So he kind of offers the balance which has been missing in his absence. Last year we would have felt where the Capitals finished like 9th in the points table. And Pant would be hungry, right? But at the same time, he also understands that while he might have a sort of sights on the T20 World Cup, he also understands right now what is important is match by match, one match at a time. He kind of creates that gap gradually. So yeah, I mean, a big shot in the arm that Rishabh Pant coming back for the Capitals, and it also enlivens the tournament itself.
बिल्कुल बिल्कुल रोहन, ramifications of this return are there for Delhi और इंडिया के लिए भी. दिल्ली कैपिटल्स के नजरिए से देखें तो आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ कैप्टनसी मिल जाती है. यू नो लॉन्गर नीड टू बी इन अ इफी सिचुएशन कि क्या थोड़े टाइम वार्नर को बनाए फिर ऋषभ आए. एंड देन जैसा नागराज ने पॉइंट आउट किया, इफ ही डज टर्न अप विद द बैट तो इंडिया के सिलेक्टर्स को तो डेफिनेटली हेडेक आने वाला है T20 वर्ल्ड कप के चयन के पहले. Yeah, but that's just 1 month, right, Nagaraj? Because एक महीना ही मिल रहा है IPL का. Before the selectors actually go and make that decision. But really, if he's looking good, then as Nagaraj said कि बहुत बड़ा headache है ये, क्योंकि ऋषभ पंत in form and अगर कुछ देर वो फील्डिंग भी कर लेते हैं, he's on the field as well, then that's going to be a big headache considering that you are still looking for options in terms of the T20 World Cup squad. अब तक जो है फाइनल नहीं हुआ है. खुद रोहित शर्मा ने ये बात कही थी कि तकरीबन 8 या 9 प्लेयर जो है फिक्स है, बाकी के स्लॉट्स जो है अभी तक खाली है. सो इट विल बी अ गुड वन टू सी इफ ही डज परफॉर्म वेल. फिटनेस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट एंड लेट्स टेक इट स्लोली. लेट हिम कम बैक टू फुल फिटनेस, मैन. लेट्स नॉट लाइक रश हिम इनटू थिंग्स. Yeah, that is such an important point. Let's not rush into it. आगे क्या होना है वो तो exciting है ही, but just the fact that he is back, ये कितनी, it's such a heartwarming story. It's a storyline जिसके बारे में ऋषभ ने खुद हमारे साथ स्टार स्पोर्ट्स पर खुल के अपने दिल की बात हमें बताई थी. तो आइए एक बार फिर से उस बिलीव इंटरव्यू को सुनते हैं. Pretend I'm above this pain, so here's another dose to forget. And I can't play safe with this losing hand, so I let my life roll like a bed. As a cricketer 24/7 क्रिकेट ही चलता है माइंड में. और फिर स्पेशली अगर आपने इतना अर्ली बचपन में स्टार्ट करा हो, स्टार्टेड व्हेन आई वाज 5-6, तो इतना कभी लाइफ में ब्रेक नहीं हुआ. अभी एक्सीडेंट के बाद जब लेटली जस्ट स्टार्ट करा है अभी बैट से कि फील कैसा आ रहा है उठा के ग्लव से, अभी थोड़ा थॉट प्रोसेस में वापस क्रिकेट को लाना स्टार्ट करा है. बिकॉज फर्स्ट फ्यू मंथ तो थॉट प्रोसेस में भी नहीं आ रहा था बिकॉज इतना पेनफुल था. बट अभी धीरे धीरे जैसे रिकवरी हो रही है, गॉड हैज़ बीन काइंड, वैसे धीरे धीरे माइंड सेट क्रिकेट की तरफ लेके जा रहा हूँ और अच्छा लग रहा है. आई थिंक जैसे जैसे बोलते हैं ना, एक डार्क टनल के बाद एक थोड़ी लाइट दिखती है, वो मेरे को लगता है कि एक लाइट दिखनी स्टार्ट हुई है अभी थोड़ा सा. Beautifully said. Light at the end of a dark tunnel. There's light inside for Delhi Capitals. Who knows? Very soon for Indian cricket too. बेसब्री से इंतजार रहा है सबको ऋषभ पंत की वापसी का. How soon could he be back on the big stage? We can't wait to see that. On that note, आज के लिए इतना ही. Follow the Blues live पर. Nagraj, Rohan, thank you so much for your time. I look forward to your company as the Ranchi test progresses. और viewers, आपको क्या लगता है ऋषभ पंत के कमबैक से आप कितने एक्साइटेड हैं? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में. एंड बी श्योर टू जॉइन अस अगेन ऑन फॉलो द ब्लूज लाइव कल शाम 5 बजे.